Hello, good afternoon. Let's start HP Rent Control Act. Topic is right of tenant. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि ड्यूटीज ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड देन आपका राइट ऑफ द टेनेंट्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एचपी रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर क्या क्या राइट है टेनेंट के, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें से हमने ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर भी लिए हैं जब हमने ड्यूटीज डिस्कस करी थी। टू मेक द रिपेयर हिमसेल्फ, टू फर्स्ट राइट आ जाएगा आपका मेक द रिपेयर हिमसेल्फ हिमसेल्फ और अप्लाई टू कलेक्टर, अप्लाई टू कलेक्टर कंट्रोलर, सॉरी कंट्रोलर फॉर परमिशन टू गेट सच रिपेयर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने कर लिया है डिस्कस। तो सेक्शन अगर हम सेक्शन 13 क्लॉज 1 की बात करें तो वो ड्यूटी आ जाती है। किसकी ड्यूटी आता है? लैंडलॉर्ड की ड्यूटी। एंड सेक्शन 13 क्लॉज 2 एंड 13 क्लॉज 3 ये है टेनेंट के राइट। ठीक है, क्या है? टेनेंट के राइट्स। क्लियर? तो इसके रिगार्डिंग डिक्टेशन भी ऑलरेडी डन विद प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है थॉरली। सेकंड जो है आपका राइट आता है, सेकंड जो राइट आता है आपका वो है टू फाइल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन, रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। मतलब ये राइट है, जनरली ड्यूटी भी है ये आपका लैंडलॉर्ड की। 14 क्लॉज 5 की बात करें हम, 14 क्लॉज 5। कुछ ही सिचुएशन होती है जहां पे लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट को वैकेट करवा देता है। आफ्टर दैट उसको वो पोजेशन जो प्रमाइसेस अपने पोजेशन में लेनी होती है, उसके लिए टाइम पीरियड है। कितने टाइम के अंदर उसने अपने लैंडलॉर्ड ने, मान लो सपोज ये वाली पोजेशन वैकेट करवाई, आफ्टर दैट इसको पोजेस करना पड़ेगा। किसको? लैंडलॉर्ड को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा, अपने यूज में लाना पड़ेगा। अगर वो इसको अपने पोजेशन में नहीं लाता है, उसको बैकेट ही रखता है, तो राइट हो जाता है टेनेंट के पास कि वो उसको रिस्टोर करवा दे फिर से। ठीक है, क्लियर? ये हम कहां डिस्कस करेंगे? सेक्शन 14 क्लॉज 5 ये हम डिस्कस करेंगे अभी। सेक्शन 14 क्लॉज 5। ठीक है, ये ड्यूटीज भी है और आपका राइट भी है। किसका? टेनेंट का। 14 क्लॉज 5 ऑफ द एचपी रेंट कंट्रोल एक्ट। Where 14 clause 5 of the Rent Control Act, where a landlord who has obtained possession of a building or rented land in pursuance of an order under subsection 3। अब ये कह रहा है 14 क्लॉज 3 के अंदर अगर उसने वैकेट करवाने का ऑर्डर इविक्शन पिटीशन फाइल की होगी, किसमें? 14 क्लॉज 3। 14 क्लॉज 3 के अंदर अगर कोई लैंडलॉर्ड ऑब्टेन करता है पोजेशन, इविक्ट करवाता है किसी टेनेंट को, डज नॉट ऑक्युपाई, और उस प्रमाइसिस को वो ऑक्युपाई नहीं करता है, डज नॉट ऑक्युपाई इट हिमसेल्फ, और ए पोजीशन वाज ऑब्टेन्ड बाय हिम फॉर हिज फैमिली इन परसोनेंस ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन सबसेक्शन 3A3। ठीक है, सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज ए और सबसेक्शन 3। हिज फैमिली डज नॉट ऑक्युपाई, अगर उसने अपने पर्पज के लिए क्लॉज 3 में, या फिर नेक्स्ट पर्पज के लिए उसने पोजीशन ली हो। ठीक है, तो इन दैट केस, ठीक है,
तो इन दैट केस अगर वो फैमिली के पर्पज से भी ली हो, ठीक है, फैमिली के पर्पज से ली हो, तो इन दैट रेजिडेंशियल पर बिल्डिंग और पोजीशन वाज ऑब्टेन बाय हिज और ऑन बिहाफ और हिज सन और हिज डॉटर in pursuance of an order under clause D of subsection 3. His son or a daughter does not occupy it for the purpose for which the possession was obtained. अगर सन और डॉटर ने वो ऑब्टेन की पोजीशन जिस पर्पस के लिए उन्होंने ऑब्टेन की, उसके बाद वो उस पर्पस के लिए ऑक्यूपाई नहीं की उन्होंने, ठीक है, क्लियर। कॉन्टिन्यूस फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, कब तक? 12 महीने तक वो पोजीशन क्या रही, फिर खाली रही, उन्होंने ऑक्यूपाई नहीं की। डेट ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग पोजीशन, और if possession was obtained under section 15 clause 2, अगर 15 clause 2 के अंदर वो पोजीशन ऑब्टेन की है, he does not occupy it for a personal use for continuous period of 3 months from the date of obtaining possession, or where the landlord who has obtained possession of the building under subsection 3 clause C put that building to any use other than that for which it was obtained, or let it out to any tenant other than for tenant evicted from it. The tenant, अब देखो यहाँ पे राइट दिया गया लास्ट लाइन में, द टेनेंट हु हैज बीन इविक्टेड, जिसको उसने इविक्ट करवा दिया था, टेनेंट हु हैज बीन इविक्टेड मे अप्लाई टू द कंट्रोलर फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट he shall be restored to possession of such building or rented land, and the controller shall make an order accordingly. अब इस बात को कैसे समझेंगे हम? ये कह रहा है, अगर मान लो सपोज फॉर एग्जाम्पल ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, ये रेंट लेट आउट कर रखी है किसी को, टेनेंट को, किसने? लैंडलॉर्ड। अब मान लो सपोज लैंडलॉर्ड ने इविक्शन पिटीशन फाइल कर दी, इविक्शन पिटीशन फाइल कर दी 14 क्लॉज 3 के अंदर, ठीक है, 14 क्लॉज 3 के अंदर या 14 क्लॉज 3 सी के अंदर, इस तरह से इविक्शन पिटीशन फाइल है, या फिर, ठीक है, समझ रहे हो यहां पे, अब या तो उसने 14 क्लॉज 3 या फिर सन और डॉटर के पर्पस के लिए, सन और, जब मैं एक साथ ही एग्जांपल दे दूंगा समझ आ जाएगा, सन और डॉटर के पर्पस के लिए इविक्शन पिटीशन, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, इविक्शन ऑर्डर पास, परमाइसिस क्या कर दी? बैकेट कर दी, परमाइसिस बैकेटेड, मतलब इस टेनेंट को अब इस परमाइसिस से बाहर निकाला गया। बट इस, अब ये कह रहा है, सेक्शन बोल रहा है, अगर ये जो लैंडलॉर्ड है, ये जो लैंडलॉर्ड है, जिस पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए, या इसके सन और डॉटर ने जिस पर्पस के लिए इसको इविक्ट करवाया था, उन्होंने नॉट ऑक्युपाई दैट प्रीमाइसेस 12 महीने तक, 12 मंथ्स तक, इस प्रीमाइसेस में वो पर्पस उनने यूज नहीं किया, वो प्रीमाइसेस उनने यूज नहीं की फॉर दैट पर्पस। कितने महीने तक? 12 महीने तक फ्रॉम द डेट ऑफ इविक्शन ऑर्डर। अगर 12 महीने तक इन्होंने ये वैकेट रखी, ठीक है, बेशक टेनेंट को निकाल दिया यहां से, टेनेंट चला गया, वो चला गया, ठीक है, अब या फिर जिस पर्पस के बेसिस पे इन्होंने वैकेट करवाई उस पर्पस के लिए वो यूज नहीं की, ठीक है, जिस पर्पस के लिए वो वैकेट करवाई थी उस पर्पस के लिए, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में क्या बोला, कंट्रोल किया, मुझे इस पर्पस से यूज करना है, मुझे अब अपना यूज करना है, इसको बैकेट करवाना, उसको बैकेट करवा दिया उस पर्पस के लिए, लेकिन उन्होंने खुद वो पर्पस यहाँ पे यूज नहीं किया उस पोजीशन को, कितने महीने तक? 12 महीने तक, या कि उस पर्पस के लिए। फिर जो टेनेंट है, कौन सा टेनेंट? जिसको इन्होंने निकाला था, उस टेनेंट के पास राइट आ जाता है, वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कंट्रोलर के पास कि मुझे ये वाली पोजीशन फिर से रिस्टोर किया जाए। किस चीज को रिस्टोर किया जाए? बिकॉज ड्यू टू नॉट ऑक्युपाइड द पोजीशन बाय द लैंडलॉर्ड, क्यों उन्होंने वो ऑक्युपाई नहीं की, 12 महीने तक बैकेट रही वो पोजीशन, या वो पर्पस यूज नहीं किया जिस पर्पस के लिए उन्होंने बैकेट करवाई थी, ठीक है,
तब वो रिस्टोरेशन का राइट किसके पास आ जाता है? 12 महीने के बाद कंडीशंस ये फुलफिल होनी चाहिए, फिर किसके पास आ जाता है? आपका टेनेंट के पास। ठीक है। सेम ईयर ये कह रहा है सेक्शन 15 क्लॉज 2 के अंदर जो स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड है, स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड ने, इन्होंने अगर कोई इविक्शन करवाई, इविक्शन हुई किस ग्राउंड पे? 15 क्लॉज 2 के ग्राउंड पे, और 3 मंथ तक, 3 मंथ्स तक उसको नॉट ऑक्युपाई, नॉट ऑक्युपाई। तो आफ्टर 3 मंथ के बाद टेनेंट, जिस टेनेंट को इन्होंने निकाला था, जिस टेनेंट को वैकेट करवाया था, वहां से इविक्ट करवाया था, उस टेनेंट के पास राइट आ जाता है, राइट टू रिस्टोरेशन ऑफ द पोजीशन। ठीक है, वो रिस्टोरेशन का लगा सकते हैं। हाँ, अगर वो यूज कर लेते हैं इसको 3 महीने के अंदर, फिर उसके पास राइट खत्म हो जाता है। ठीक है। और इट इज ऑल्सो ड्यूटी ऑफ द लैंडलॉर्ड टू ऑक्युपाई द पोजीशन विद इन दैट पीरियड। यहाँ पे भी उसकी ड्यूटी है कि ऑक्युपाई करे, वो उस पर्पज के लिए यूज कर जिस पर्पज के लिए उसने बैकेट करवाया था। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, लिखो। द प्रोविजन अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 5, द प्रोविजन अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 5 has been carved out, has been carved out, has been carved, C-A-R-V-E-D, carved out to forewarn, F-O-R-E, forewarn, W-A-R-N, forewarn, F-O-R-E, इकट्ठे लिखना, forewarn. The greedy landlord, the greedy landlord, that, that in case, that in case, anyhow, that in case, anyhow, or the other, anyhow, or the other, he succeeded, he succeeded in, he succeeded in evicting his tenant, succeeded in evicting his tenant, evicting his tenant on coined ground, C-O-I-N-E-D, coined grounds, comma. The tenant can still apply, the tenant can still apply for restoration of possession, apply for restoration of possession and on proof of the following, on proof of the following fault grounds, on proof of the following fault grounds, following fault grounds of the landlord, fault grounds of the landlord, comma, can succeed in, can succeed in repossessing, repossessing the said premises, repossessing the said premises, full stop. That the, that the outer limit of, that the outer limit of 12 months, outer limit of 12 months has been prescribed, has been prescribed by section 14 clause 5, by section 14 clause 5 for the landlord, for the landlord to put the, to put to use, to put to use the premises, to put to use the premises from which, to use the premises from which the tenant has been evicted, which the tenant has been evicted, full stop. Evicted, full stop. First point लिखना. Eviction under section 14 clause 3
eviction under section 14 clause 3 or 14 clause 3 14 आगे लिखो और 14 clause 3 subsection 3 clause A सब clause 3 इस तरह से 14 clause 3 A 3 and section 14 clause D section 14 clause D of HP Rent Control Act from the date of obtaining the possession from the tenant and on his failure to do so the evicted tenant has been given the right to apply to the controller for an order directing the landlord that such tenant shall be restored to possession of the same premises of which he was evicted full stop. Next, second point. Similarly, right to evicted tenant has been given if the landlord who has obtained possession under section 15 clause 2 of HP Rent Control Act has not put to use the said premises within a period of 3 months from the date of obtaining such possession ठीक है. थर्ड राइट आपको आ जाता है यहाँ पे. फर्स्ट और सेकंड मैंने बता दिया. अगर राइट आपको आता है केवल टेनेंट के तो 13 क्लॉज 2 3 वो भी राइट है. 14 क्लॉज 5 थर्ड है राइट टू गेट कॉम्पनसेशन. नहीं, ये थर्ड राइट है अलग से. 3 राइट बता रहा हूं ना मैं आपको. सेकंड राइट हमारा कंप्लीट हो गया. अब थर्ड राइट है राइट टू कॉम्पनसेशन दैट इज अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 7. पर सिंपल है कि इफ लैंडलॉर्ड फाइल्स
लैंडलॉर्ड फाइल्स फ्रिविलियस और विक्सेशियस एप्लीकेशन फॉर हिज eviction. अगर लैंडलॉर्ड फॉल्स एप्लीकेशन फाइल करता है अगेंस्ट द टेनेंट, तो द कंट्रोलर में ग्रांट हिम कॉम्पनसेशन वर्थ 500. तो टेनेंट को यहाँ पे कितना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा? 500 का. ये भी एक तरह का राइट है उसका, ठीक है. देन फोर्थ राइट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सेक्शन 9. फोर्थ राइट, राइट टू रिकवर. राइट टू रिकवर excess rent within 1 year. Within 1 year. ठीक है, समझ गए? राइट फ्रॉम द पेमेंट, जब से आपने फ्रॉम द, विद इन 1 year फ्रॉम द पेमेंट. सेक्शन 9. ठीक है, क्लियर? हमने सेक्शन 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो रहा है, 10 भी कर लिया, 11 भी, 12 भी, 13 भी. ठीक है, इतने सेक्शन आपके हो गए. तो सेक्शन 9 क्या बोलता है कि कई बार हम ओवर पेमेंट कर देते हैं. ओवर पेमेंट कर देते हैं. मान लो सपोज आपने कोई एडवांस दिया है, या फिर ओवर पेमेंट कर दिया आपने किसको? टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को. तो टेनेंट के पास राइट है, एचपी रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर ही राइट है, क्योंकि हमने रेंट पे किया. अगर जिस दिन आपने ओवर पेमेंट की, ओवर पेमेंट, अब ओवर पेमेंट किसने की? टेनेंट ने किसको की? लैंडलॉर्ड को. अब टेनेंट के पास राइट है, ही कैन रिकवर, उसको रिकवर कर सकता है फ्रॉम द लैंडलॉर्ड. ठीक है, बट एचपी रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आपके पास कितना टाइम पीरियड है? 1 year. 1 year के अंदर मान लो सपोज फॉर एग्जाम्पल रेंट था 15,000, आपने पे कर दिया 25,000, ओवर पे कर दिया, या किसी वजह से ओवर पे कर दिया. तो कितना ओवर पे कर दिया? 10,000. अब जिस दिन आपने ओवर पे किया, दैट दैट मीन्स उस दिन आपके पास क्या आ गया? कॉज ऑफ एक्शन. आपके पास राइट टू रिकवर, जो ओवर ट्यूजडे और सॉरी ओवर पेमेंट है, उसको रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द लैंडलॉर्ड. बट उसके लिए टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितने हैं आपके पास? ओनली 1 year. रेंट एक्ट के अंदर आप सिर्फ 1 year के अंदर ही उसको क्लेम कर सकते हैं. बट एनी अदर लॉ, जैसे अगर 1 साल के बाद, ऐसा नहीं है कि रेमेडी खत्म है, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर रेमेडी आपकी एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बट फिर आप कहां जाओगे? सिविल सूट फाइल करोगे. कौन सा सूट? सिविल सूट फाइल करोगे सिविल कोर्ट के पास. कौन सा? रिकवरी सूट. कौन सा सूट? रिकवरी. और रिकवरी सूट के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 3 years. कितना होता है? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट. तो मतलब फिर भी आपके पास ऑप्शन है, बट रेंट एक्ट के अंदर खुद ही एक प्रोविजन दे रखा है कि 1 year के अंदर आप इस एक्ट के अंदर कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगा के सेक्शन 9 की आप रिकवर कर सकते हैं. एक बार सेक्शन 9 देखना डायरेक्ट में. अब रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर्ड. ठीक है, जो कि पे नहीं होना था बट उसको आप रिकवर कर सकते हैं. वेयर एनी सम हैज बीन पेड विच सम इज बाय रीजन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट नॉट पेएबल. मान लो आपने कोई पे कर दिया और इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो पेएबल नहीं था, तो मतलब ओवर पे कर दिया. सच सम शैल एट एनी टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year आफ्टर द डेट ऑफ द पेमेंट. विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year का अंडरलाइन कर देना. आफ्टर द डेट ऑफ द पेमेंट और इन द केस ऑफ पेमेंट मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. अभी एक्ट जब आया उससे पहले, विद इन 1 year आफ्टर द अपॉइंटेड डे. अपॉइंटेड डे का कौन सा था? 18 अगस्त. ये उस टाइम के लिए है, अगर मान लो उस टाइम भी किसी ने पे कर रखा हो, उनके लिए भी एक राइट दिया गया था कि 1987, 18 अगस्त 1987 से 1 साल के अंदर आपको वो रिकवर कर सकते हैं अगर आपने पेमेंट कर रखी हो तो. Be recoverable by the tenant by whom it was paid or his legal representative from the landlord.
LR भी कर सकते हैं और जिसने वो पे कर रखा है वो भी कर सकता है। किससे रिकवर करोगे? लैंडलॉर्ड से, हु रिसीव द पेमेंट और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जिस लैंडलॉर्ड ने वो पेमेंट रिसीव की है, अगर वो लैंडलॉर्ड नहीं रहा, डेथ हो गई एक्सेट्रा, तो उसके LR से आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर कर सकते हैं। एंड मे विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर मेथड ऑफ रिकवरी। विदाउट प्रेजुडाइज मतलब बिना अफेक्ट, कोई और भी मेथड हो सकता है रिकवरी का, जो मैंने आपको सिविल सूट का बताया था। विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर मेथड ऑफ द रिकवरी be deducted by such tenant from any rent payable within such 1 year by him to such landlord. ठीक है? In this section, the expression legal representative has the same meaning as assigned to in CPC and include also in the case of joint family property, the joint family of which the deceased was a member. ठीक है? तो क्लियर है, आपके पास यहाँ पे राइट आ जाता है कि आप उसको रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट, और अगर 1 year लैप्स हो जाता है देन यू हैव राइट टू गेट बैक द जो पेमेंट है बाय फाइलिंग रिकवरी सूट बिफोर द सिविल कोर्ट। ठीक है, प्लीज नोट ऑन। द वर्ड विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी लिखो, नोट ऑन द वर्ड without prejudice to, the words without prejudice to, without prejudice to any other method, any other mode of payment, any other mode of payment, sorry, mode of recovery, correct करना, mode of recovery means, mode of recovery means that apart from other modes of recovery, that apart from other modes of recovery legally available to the tenants, legally available to the tenants, full stop. Section 9 provides a special remedy. Section 9 of HP Rent Control Act provides a special remedy, a special remedy to a tenant, provides a special remedy to a tenant, comma, to recover the overpaid rent, to recover the overpaid rent which, recover the overpaid rent otherwise was which otherwise was not payable, which otherwise was not payable under the various provision, not payable under the various provision of this act, by him to the landlord. This act by him to the landlord, full stop. Next paragraph. In a summary way, in a summary way, under this act, within a period of 1 year, within a period of 1 year of such payment, period of 1 year of such payment, and if such overpayment, if such overpayment is made, if such overpayment is made before 17 November 1971, before 17 November 1971, that is commencement date of the act, that is commencement date of the act, then within 1 year, then
within 1 year from 18 August 1987. 18 August 1987, that is appointed day. That is appointed day under this act. Appointed day under this act. Either by way of either by way of either by way of filing an application, either by way of filing an application under section 9, filing an application under section 9 of HP Rent Control Act before the controller, HP Rent Control Act before the controller, or by adjusting. आप एडजस्ट भी कर सकते हो उस पेमेंट को, रेंट में ही एडजस्ट कर दिया, ठीक है, और बाय एडजस्टिंग द सैड ओवर पेमेंट, or adjusting the said overpayment in the rent within the said period of within the said period of 1 year. Next paragraph, full stop. Next paragraph. Any dispute as to overpayment or adjustment of such overpayment, any dispute as to overpayment or adjustment of such overpayment within 1 year by the tenant, within 1 year by the tenant can be adjudicated upon by the controller, as and when a petition is filed by the landlord on the grounds of arrears of rent against the tenant. Full stop. Next paragraph. After 1 year, this special remedy is not available to the tenant, and he has to file a civil suit. For recovery of such amount of overpayment within a period of 3 years from the date of such overpayment.
from the date of such overpayment. Clear? The next right of the tenant, a right of tenant to obtain a receipt for the amount paid by the tenant to landlord. ठीक है, जब हम कोई रेंट पे करते हैं, रेंट एक्ट कहता है कि लैंडलॉर्ड की ड्यूटी भी है ये रिसिप्ट देना, और टेनेंट का राइट है टू कलेक्ट द रिसिप्ट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड. ठीक है, कौन सा राइट है? फोर्थ राइट क्या आ जाएगा? फोर्थ या फिफ्थ राइट होगा. ठीक है, राइट ऑफ टेनेंट, राइट ऑफ टेनेंट टू obtain receipt for the amount paid under section 20. ठीक है, यहां पे 20 क्लॉज 2 स्पेशली है. अब देखो सेक्शन 20, 21, 23, ये सेक्शन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. सेक्शन 20 क्योंकि कनेक्टेड है 23. क्लियर? देन पहला राइट आ जाता है राइट ऑफ टेनेंट टू ऑब्टेन रिसिप्ट फॉर द अमाउंट पेड बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड, एंड इट इज द ड्यूटी, corresponding duty of the landlord also to give receipt. सेक्शन 20 देखना फिर एक्ट में. Receipt to be given for the rent paid. Every tenant shall pay rent within the time fixed by the contract. ये कह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है तो उसमें जो टाइम फिक्स किया उस दिन आपको पेमेंट करनी है रेंट के. मान लो 10th ऑफ द जो मंथ रखा है कि 10th, ठीक है, देनी है पेमेंट, तो उस दिन आपको देना पड़ेगा. और इन एब्सेंस ऑफ विच सच कॉन्ट्रैक्ट बाय द 15th डे ऑफ मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर विच इट इज पेएबल. ठीक है, जिसका मतलब 15 डे पे आप उसको पेमेंट करनी पड़ेगी. एवरी टेनेंट, ये राइट है यहाँ पे. पहले तो ये एक जनरल प्रोविजन है कि रेंट कब पे करना है आपको, वो ऊपर दिया या तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग या फिर रेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 15 डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ आपको रेंट पे करना पड़ेगा. ठीक है, सेकंड थिंग, सेकंड बोलता है राइट, every tenant who makes payment of rent to his landlord shall be entitled. shall be entitled को अंडरलाइन कर देना कि वो entitled है. किस चीज के लिए entitled है? entitled to obtain forthwith, immediate, जैसे ही आप पेमेंट करते हो forthwith वो entitled है from the landlord. किससे? लैंडलॉर्ड से. और his authorized agent, अगर लैंडलॉर्ड खुद नहीं है जिसको आपने पेमेंट का ऑथोराइज एजेंट, और रिटर्न रिसिप्ट. रिटर्न रिसिप्ट कैसे होनी चाहिए? रिटर्न रिसिप्ट for the payment amount paid to him duly signed by landlord or his authorized agent. ठीक है, लैंडलॉर्ड और ऑथोराइज एजेंट, या तो लैंडलॉर्ड उसको साइन करे या फिर ऑथोराइज एजेंट. ये राइट हो गया. अब ये कह रहा अगर वो रिसिप्ट नहीं देता है तो क्या होगा? इफ द लैंडलॉर्ड और इज ऑथोराइज एजेंट रिफ्यूज और निग्लेक्ट, इफेक्ट बोल सकते हैं आपकी, अगर वो रिफ्यूजल करता है लैंडलॉर्ड, निग्लेक्ट करता है कि मैं रिसिप्ट नहीं देता हूं, तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या है? If the landlord or his authorized agent refuses or neglect to deliver to the tenant a receipt referred to in subsection 2, the controller may, discretion power of the controller, on an application made to him in his behalf by the tenant, application मूव कर सकता है टेनेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट. यहां पे भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है. अगर आपको रिसिप्ट नहीं देता है, टेनेंट को रिसिप्ट नहीं देता है, उसको 2 महीने के अंदर कहां पे अप्लाई करना पड़ेगा? कंट्रोलर के पास. ठीक है, जब पेमेंट करने के बाद. एंड आफ्टर हियरिंग द लैंडलॉर्ड और हिज ऑथोराइज्ड एजेंट, उसके बाद यहाँ पे नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा. लैंडलॉर्ड को भी सुना जाएगा या उसके ऑथोराइज्ड एजेंट को सुना जाएगा. बाय ऑर्डर direct the landlord or his authorized agent to pay to the tenant by way of damages such sum not exceeding double the amount of rent paid by the tenant and the cost of the application, and shall also grant a certificate to the tenant in the respect of the rent paid. तो यहाँ पे प्रोसीडिंग क्या होगा कि मान लो सपोज फॉर एग्जांपल कोई लैंडलॉर्ड है, ठीक है, ये टेनेंट ने रेंट पे किया, टेनेंट ने क्या किया? रेंट पेड किया किसको? लैंडलॉर्ड को. अब ये रिफ्यूज कर रहा है, फोर्थ विद लिखा है, उसी टाइम आप बोल सकते हैं रिसिप्ट मुझे दो. ये रिफ्यूज कर रहा है,
फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट आपको कितना टाइम दिया है? 2 मंथ। कितना टाइम दिया है? 2 मंथ के अंदर अगर रिफ्यूज कर रहा है तो पहला तो राइट है टेनेंट का, ठीक है, रिफ्यूज कर रहा है तो 2 मंथ के अंदर आपको क्या करना है? मान लो कंट्रोलर के पास अप्लाई कर दिया। टेनेंट यहाँ एप्लीकेशन फाइल करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द टेनेंट, ठीक है। कंट्रोलर फिर यहाँ पे समन करेगा, नोटिस किसको करेगा? नोटिस किसको जाएगा? लैंडलॉर्ड को। फिर हियरिंग होगी, लैंडलॉर्ड को सुना जाएगा या फिर उसके ऑथराइज एजेंट को सुना जाएगा। आफ्टर दैट जो ऑर्डर किया जाएगा यहाँ पे, कौन ऑर्डर करेगा? फिर ऑर्डर करेगा कंट्रोलर, ऑर्डर करेगा लैंडलॉर्ड के लिए, ठीक है। कितना अमाउंट कॉम्पनसेशन मिलेगा? कितना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा? कॉम्पनसेशन प्लस जो लिटिगेशन चार्जेस है, उसको हम लिटिगेशन चार्जेस भी बोलेंगे, जो एप्लीकेशन में उसका खर्चा आया वो उसको पे किया जाए, प्लस एक सर्टिफिकेट इशू होगा, सर्टिफिकेट इशू होगा। ये जो कॉम्पनसेशन है फिर एक बार देख लो, ये प्रीलिम्स में यहां से कई बार क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट द लैंडलॉर्ड ऑफ हिज ऑथराइज्ड एजेंट टू पे द टेनेंट बाय वे ऑफ डैमेजेस। कॉम्पनसेशन मतलब डैमेजेस पे करेगा, द सम नॉट एक्सीडिंग डबल द अमाउंट ऑफ रेंट पेड। मतलब डबल मैक्सिमम कितना हो सकता है? मान लो सपोज इसने 5,000 रेंट दिया तो मैक्सिमम को डैमेजेस कितना हो सकता है? 10,000, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, डबल नहीं होना चाहिए। बट वो मिनिमम 100 रुपए भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, बट मैक्सिमम डबल द अमाउंट ऑफ द रेंट नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्लस एप्लीकेशन का जो चार्जेस है उसको जो जो एक्सपेंडिचर है उसका एक्सपेंसिव लगे, साथ में सर्टिफिकेट इशू होगा रेंट पे करने का, ठीक है। क्लियर? ये किस में होगा? सेक्शन 20। दिस इज ऑल्सो राइट ऑफ द टेनेंट, ठीक है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी ऑफ द लैंडलॉर्ड, उसकी ड्यूटी है रिसिप्ट पे उसको रिसिप्ट देना, ठीक है। प्लीज नोट ऑन एवरी टेनेंट हु every tenant who makes payment, every tenant who makes payment of rent, every tenant who makes payment of rent, makes payment of rent to his landlord, to his landlord, shall be entitled to obtain, shall be entitled to obtain forthwith, entitled to obtain forthwith from the landlord, from the landlord or his, from the landlord or his authorized agent, or his authorized agent, a written receipt, a written receipt for the amount, for the amount paid to him, paid to him duly, paid to him duly signed by the landlord, duly signed by the landlord, or signed by the landlord or his authorized agent, or his authorized agent. Next paragraph. Section 20 of HP Rent Control Act. Section 20 of HP Rent Control Act creates respective obligations, creates respective obligation, creates respective obligations on the part of the landlord, respective obligation on the part of the landlord as well the tenant, part of the landlord as well the tenant in respect of rent, in respect of rent, full stop.
The tenant is obligation. The tenant is obligation to pay the rent. The tenant is obligation to pay the rent to the landlord. Pay the rent to the landlord either within the time fixed by contract, either within the time fixed by contract or in the absence of such contract or in the absence of such contract by 15th day of by 15th day of succeeding succeeding month succeeding month end is entitled to a receipt from the landlord is entitled to a receipt from the landlord or his his authorized agent for such payment. Authorized agent for such payment, full stop. Next paragraph. Agent for such payment, full stop. Next paragraph. If such receipt is refused, if such receipt is refused to him, such receipt is refused to him in spite of the payment, in spite of the payment of such rent, in spite of the payment of such rent, comma, the tenant within a period of 2 months, the tenant within a period of 2 months from such payment, may make an application to the controller, may make an application to the controller and may obtain a certificate in respect of the rent paid, full stop. Next paragraph. The controller can burden the landlord in that situation with damages to the extent of double of the said amount, beside double of the said amount, beside the cost of the application, if the tenant succeed in proving succeed in proving that in spite of payment of rent by him, that in spite of payment of rent by him,
His landlord did not issue the receipt. His landlord did not issue the receipt. Did not issue the receipt. ठीक है. This is all about section 20. The next right, a right to deposit rent. ठीक है. A right to deposit rent with the controller where the landlord does not accept rent. Does not accept the rent. ठीक है. सेक्शन 21, 22 एंड 23. क्लियर. सेक्शन 21 देखना. मान लो कई बार क्या होता है, लैंडलॉर्ड आपका रेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. ठीक है. या फिर आप कई बार मान लो जो लैंडलॉर्ड है उसकी डेथ हो गई, आफ्टर दैट उसके लीगल हेयर्स कौन है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो. उस केस में आपके पास ऑप्शन है, राइट है कि आप उस रेंट को कहां पे डिपॉजिट करोगे, कंट्रोलर के पास. बट प्रोविजन कौन से, सेक्शन 21 देखना डायरेक्ट में. Deposit of rent by the tenant, where the landlord does not accept any rent tendered by the tenant within the time referred to in section 20, or refused or neglect to deliver a receipt referred to therein, or where there is a bona fide doubt as to the person or person to whom the rent is payable, the tenant may deposit such rent with the controller in the prescribed manner. ये कि अगर जो सेक्शन 20 के अंदर टाइम प्रेस्क्राइब्ड किया हुआ है उसके अंदर वो रेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या वो रेंट लेने से रिफ्यूज कर रहा है, या आपको रिसिप्ट देने से रिफ्यूज कर रहा है, आपने रेंट भी पे नहीं किया. क्यों पे नहीं किया? क्योंकि वो रिसिप्ट नहीं दे रहा है. ठीक है. अगर आपने पे कर दिया और उसके बाद वो रिसिप्ट दिया तो सेक्शन 20 के अंदर राइट है. अगर आपने रिसिप्ट नहीं दे रहा, अभी रेंट भी पे नहीं किया उस वजह से, तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उस रेंट को कहां पे डिपॉजिट करोगे, कंट्रोलर के पास. या फिर कोई बोनाफाइड डाउट है आपको पर्सन के ऊपर कि ये सच में लैंडलॉर्ड है नहीं है, ठीक है, इस तरह से, तो आपके पास एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है जो एप्लीकेशन आगे लिखा है. द डिपॉजिट शैल बी अकम्पनीड बाय एन एप्लीकेशन बाय द टेनेंट containing the following particular name. अब उस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या लैंग्वेज डालनी है. The building or rental land for which the rent is deposited with the description submission for identifying the building or rental land. बिल्डिंग की डिस्क्रिप्शन डालने, अब जैसे प्लॉट नंबर होता है, बिल्डिंग नंबर होता है, प्रॉपर्टी आईडी होता है, वो सारा. द पीरियड फॉर विच द रेंट इज डिपॉजिटेड, कौन से किस पीरियड का किस पीरियड का रेंट देना चाह रहे हो वो. द नेम एंड एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड और दोज क्लेमिंग टू बी टाइटल टू सच रेंट, और नेम और एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन उसके इंटाइटल है वो भी. सच अदर पर्टिकुलर्स में भी प्रिस्क्राइब, कुछ और पर्टिकुलर जो भी प्रिस्क्राइब्ड है. जैसे ही आपने एप्लीकेशन फाइल की, कोर्ट क्या करेगा, ऑन सच डिपॉजिट ऑफ द रेंट बीइंग मेड, जैसे आपने डिपॉजिट किया विद एप्लीकेशन पर्टिकुलर के साथ, द कंट्रोलर शैल सेंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर अ कॉपी और कॉपीज of the application to the landlord or person claiming to be entitled to the rent with an endorsement of the date of the deposit. फिर जो कंट्रोलर है वो क्या करेगा, जैसे मान लो सपोज आज आपने रेंट डिपॉजिट कर दिया बिल एप्लीकेशन बना के और पर्टिकुलर वहां पे लिख के, अब उसकी कॉपी कॉपी किसको सेंड की जाएगी, लैंडलॉर्ड को. कौन सेंड करेगा, कोर्ट सेंड करेगा विद नोटिस. नोटिस जाएगा, समन जाएगा, उसके साथ वो कॉपी भी जाएगी ताकि उस अवेयर हो कि आपके रिगार्डिंग कोई रेंट यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है इस कंट्रोलर के पास. इफ एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर द विड्रॉल ऑफ एनी डिपॉजिट और रेंट, द कंट्रोलर शैल, if satisfied that the applicant is the person entitled to receive the rent deposited, order the amount of the rent to be paid to him in the manner prescribed. फिर जो लैंडलॉर्ड है उसके पास ऑप्शन है, वो विड्रॉल, उसको उस पैसे को, मनी को विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है कंट्रोलर के पास कि वो जनाब की आपके पास कंट्रोलर का कोर्ट को लिखेगा वो कि आपके पास कोई रेंट अमाउंट डिपॉजिटेड है, ठीक है, मैं उसको विड्रॉ करना चाहता हूँ. बट कोर्ट इजीली उसको विड्रॉ नहीं करवाएगा, पहले कोर्ट सेटिस्फाई करेगा कि सच में ये इंटाइटल भी है रेंट लेने का, क्या ये सच में लैंडलॉर्ड है, क्या इंटाइटल है कि नहीं है, तब उसको यहाँ पे ऑर्डर कर देगा कि उसको पेमेंट कर दो. Provided that
No order for payment of any deposit of rent shall be made by the controller under this subsection without giving all person named by the tenant in his application. Under subsection 2 is as claiming to be entitled to the payment of such rent an opportunity of being heard, and such order shall be without prejudice to right of the such person to receive such rent being decided by the court of competent jurisdiction. ये कह रहा है कि अगर एप्लीकेशन के अंदर दो तीन आदमियों का नाम लिखे हुए हैं कि ये इंटाइटल है, मुझे लगता है, बट आई एम कंफ्यूज कि कौन है यहाँ पे इंटाइटल है, तो तीनों तीनों को सुना जाएगा पहले, उसके बाद कोर्ट रिलीज करेगा। ठीक है, अगर एक नाम है तब एक ही पर्सन को सुना जाएगा और देन कोर्ट रिलीज ऑर्डर दे देगा, डिपेंड अपॉन कि वो सेटिस्फाई करता है कोर्ट को कि नहीं करता है। If at the time of filing the application under subsection 4, अब subsection 4 के अंदर कौन सी एप्लीकेशन फाइल होती है? Withdrawal application by the landlord, ठीक है, but not after the expiry of 30 days from the receiving the notice of deposit। अब ये जो एप्लीकेशन है विड्रॉल के लिए टाइम पीरियड कितना है? 30 दिन का टाइम पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस। जब कोर्ट उसको समन भेजेगा, कॉपीज भेजेगा कि यहाँ पे रेंट डिपॉजिटेड, जब उसको रिसीव हो जाएगी वो कॉपीज, उस दिन से हम क्या काउंट करेंगे? पीरियड ऑफ लिमिटेशन 30 days. The landlord or the person claiming to be entitled to the rent complains to the controller that the statement in the tenant's application of the reason and circumstances which lead him to deposit the rent are untrue. The controller, after giving the tenant an opportunity of being heard, may levy on the tenant a fine which may extend to an amount equal to 2 months' rent. If the controller is satisfied that the said statement were materially untrue and may order that sum out of the fine realize the paid to the landlord as compensation। ये कह रहा है कि जब वो फाइल करेंगे तो उसका ऑब्जेक्शन भी डालेंगे कि सर जो टेनेंट ने रेंट डिपॉजिट करने का जो ग्राउंड दिया है वो अनट्रू है और वो करेक्ट नहीं है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, सच में करेक्ट नहीं है, तो टेनेंट टेनेंट के ऊपर वो एक ऑर्डर पास कर देगा, टेनेंट के ऊपर फाइन लग जाएगा। वो फाइन किसको पे करेगा? लैंडलॉर्ड के लिए। The controller may, on the complaint of the tenant and after giving an opportunity to the landlord, the being heard, levy on the landlord a fine, which may extend to an amount equal to 2 months' rent. If the controller is satisfied that the landlord, without any reasonable cause, refused to accept rent, though tendered to him within a time referred to in subsection 20, and may further order that sum out of fine realized to pay to the tenant as a compensation। अगर इसका वाइस वर्सा, अगर टेनेंट ने ये प्रूव कर दिया कि इन्होंने विदाउट कॉज रेंट लेने से मना किया एक्सेप्ट, अगर मान लो फॉल्ट लैंडलॉर्ड का पाया जाता है तो उसके ऊपर भी फाइन लगता है, और वो फाइन एज ए कॉम्पनसेशन किसको दिया जाएगा? टेनेंट को। कितना? इक्वल टू 2 months रेंट, इक्वल टू 2 months रेंट। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग डिपॉजिट एंड कंसिक्वेंस ऑफ इनकरेक्ट पर्टिकुलर इन एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट। ये कह रहे कि टाइम लिमिट क्या है डिपॉजिट करने की? No rent deposited under section 21 shall be considered to have been validly deposited under that section unless the deposit is made within 21 days of the time referred to in section 20 for payment of the rent। मतलब जिस दिन आपकी पेमेंट करनी थी तो एज पर द 20 के अकॉर्डिंग अगर तो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, मान लो 10 तारीख को आपने पेमेंट करनी थी, 10 तारीख को आपने पेमेंट, अब आप कंफ्यूज हो गए हो किसको आपने पेमेंट करनी है, तो 10 तारीख से 21 डेज आप काउंट कर लो। ठीक है, जिस दिन आपने पेमेंट करनी थी अंदर सेक्शन 20, उस दिन से 21 डेज के अंदर आपको डिपॉजिट वो करना पड़ेगा। कहां पे डिपॉजिट करना पड़ेगा? कंट्रोलर के पास। दैट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, ये मैंडेटरी नहीं है, आप बियॉन्ड 21 डेज के अंदर भी डिपॉजिट हो जाता है। नो सच डिपॉजिट शैल बी कंसीडर्ड टू हैव बीन duly made if the tenant willfully make any false statement in his application for depositing the rent unless the landlord had withdrawn the amount deposited before the date of filing an application for the recovery of possession of the building or rental land from the tenant। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी डिपॉजिट यहाँ पे वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा कब तक? अगर या तो विलफुली उसने मान लो फॉल्स स्टेटमेंट किया है जो एप्लीकेशन में लिखा है एक्सेट्रा, बट अनलेस द लैंडलॉर्ड, या तो लैंडलॉर्ड अमाउंट को विड्रॉ कर दे फ्रॉम द कोर्ट एंड द डेट ऑफ द फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ बिल्डिंग और रेंटल लैंड फ्रॉम द टेनेंट। If the rent is deposited within the time mentioned in subsection 1 and does not cease to be valid deposit for the rent reason mentioned in subsection 2, the deposit shall constitute payment of rent to the landlord as if the amount deposited have been validly tendered। अगर उसने विड्रॉ नहीं किया
ठीक है, डिपॉजिट विद डज नॉट सीज टू बी वैलिड रीजन, अगर वो वैलिड रीजन नहीं दे पाया फॉर द डिपॉजिट रेंट एक्सेट्रा, ठीक है, एंड डिपॉजिटर शैल नॉट कंस्टिट्यूट पेमेंट ऑफ द रेंट टू लैंडलॉर्ड इफ द अमाउंट डिपॉजिटेड हैव बीन वैलिडली टेंडर। सेविंग, इसके बाद 23 बोलता है सेविंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट एंड फॉरफीचर ऑफ रेंट इन डिपॉजिट, the withdrawal of rent deposited under section 21 in the manner provided therein shall not operate as an admission against the person। इसको पहले 22 पे लिखो, फिर हम डिस्कस करेंगे 23 को, ठीक है। 21 एंड 22 दोनों एक साथ हो जाएंगे, लिखो। सेक्शन 21 एंड 22 ऑफ HP रेंट कंट्रोल एक्ट, Section 21 and 22 of HP Rent Control Act deal with deposit of rent by the tenant payable to the landlord, full stop, by the tenant, comma, payable to the landlord, full stop. The tenant apart from exhausting his remedy under section 20 can deposit the rent with the rent controller on following grounds. Number one, in case his landlord does not accept the tendered rent, within time referred to in TO 2 in section 20 or refuses or neglects to delivery of receipt. Next point. In case there is a bona fide doubt as to the person or persons to whom the rent is payable, full stop. For instance, अगला पैरा करना, for instance, the tenant does not know the succeeding years HEIRS of the deceased landlord, and some persons whose bona fides is doubted by the tenant claim rent. Next paragraph. The tenant shall deposit rent before the rent controller
as per the particular mention, as per the particular mention under section 21 clause 2, under section 21 clause 2 A to D, ब्रैकेट में करना A to D। अब देखो यहाँ पे आप ना वो 4 पॉइंट डाल सकते हो जो वहां पे मेंशन किया, नेम एड्रेस बिल्डिंग सेक्टर, उसके लिए थोड़ी सी जगह भी रख सकते हो आप, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पैराग्राफ, द कंट्रोलर ऑन सच एप्लीकेशन, द कंट्रोलर ऑन सच एप्लीकेशन having been moved, having been moved, will issue, will issue notice to all persons, will issue notice to all persons so named by the tenant, notice to all persons so named by the tenant in his application and in his application and on being satisfied, on being satisfied about entitlement, being satisfied about entitlement to receive, about entitlement to receive rent, receive rent, comma, order the payment of deposited rent, order the payment of deposited rent to any one of them, to, to any one of them without prejudice to the rights, without prejudice to the rights of such persons, without prejudice to the right of such person to receive such rent, to receive such rent being decided by a court of competent jurisdiction, decided by a court of competent jurisdiction, full stop. Next paragraph. The landlord may within 30 days, within 30 days from the receipt of notice, from the receipt of notice of deposit, receipt of notice of deposit, comma, complain to the controller, complain to the controller, complain to the controller, or withdraw the amount from the controller, withdraw the amount from the controller, that the statement contained in the application, statement contained in the application of tenant, statement contained in the application of tenant for deposit, application of tenant for deposit of rent is false, of rent is false, full stop. Next paragraph. If the controller is satisfied that, if the controller is satisfied that the said statements were materially untrue, said statements were materially untrue, comma, may order
may order that a sum out of fine, sum SUM, sum out of fine, ब्रैकेट में करना, equal to 2 months rent, equal to 2 months rent, bracket close, realize from the tenant, realize from the tenant, be paid to the landlord, realize from the tenant, be paid to the landlord as compensation, full stop. Next paragraph. Similarly, the same amount of fine, can be realized from the landlord, and paid to the tenant, as compensation in case the controller is satisfied that the landlord without reasonable cause refused to accept the tender rent, full stop. Next paragraph. Though Section 22 Clause 1 prescribe 21 days time to deposit the rent. 21 days time to deposit the rent so as to make it a valid deposit. Yet it has been held that this provision is directory and not mandatory. ठीक है, मतलब आफ्टर 21 डेज भी फाइल किया जा सकता है, डिपॉजिट किया जा सकता है. केस लॉ लिखना है क्या यहाँ पे? मोहन लक्ष्मण हेडे वर्सेस नूर मोहम्मद, 1988 सुप्रीम कोर्ट. नूर मोहम्मद 1988 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज सेक्शन 23. अब मान लो सपोज सेक्शन 22 में कह रहा है कि विड्रॉ कर सकते हैं, 21 में बोले विड्रॉ कर सकते हैं. अगर मान लो वो विड्रॉ नहीं करता है तो क्या ऑप्शन है, या विड्रॉ कर दिया तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या है? देखो, सेविंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट एंड फॉरफीचर रेंट इन डिपॉजिट. सेविंग टू एक्सेप्टेंस मतलब वो एक्सेप्ट करता है उस रेंट को. द विड्रॉल ऑफ रेंट डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 21 के अंदर जो डिपॉजिट किया था, जब वो विड्रॉ किया गया इन द मैनर प्रोवाइडेड देयरइन, जो भी मैनर दिए हैं प्रिस्क्राइब करके, shall not operate, underline कर देना, shall not operate as an admission against the person withdrawing it of the correctness of the rate of the rent, the period of default, the amount due, or of any other fact stated in the tenant's application depositing the rent under the said section.
इसका मतलब ये नहीं है कि लैंडलॉर्ड ने एडमिट कर दिया, जो कुछ भी लिखा है एप्लीकेशन है वो सारा एडमिट कर दिया। अब हो सकता है कई बार क्या होता है कि लैंडलॉर्ड एनहांसमेंट की बात कर रहा हो, 5,000 रुपये रेंट है, 3 ईयर हो गए हैं, ठीक है, एज पर द जो स्टैंडर्ड रेंट के अकॉर्डिंग 3 ईयर हो गए हैं, तो 3 ईयर के बाद 10% बढ़ेगा, ठीक है। अब वो 10% नहीं देना चाह रहा है, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से वो रेंट पे नहीं कर रहा है लैंडलॉर्ड के लिए, उसने लैंडलॉर्ड के बजाय कहां पे डिपॉजिट कर दिया, कंट्रोलर के पास, ठीक है। उस बेसिस पे क्या होगा, अब इसका मतलब ये नहीं कि उसने वो एडमिट कर दिया कि हाँ यही रेंट रेट है हमारा। अब हो सकता है रेंट आपका 10,000 है, उसने 8,000 बार डिपॉजिट किए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रेंट करेक्ट है, या उसने विड्रॉ कर दिया, चुपचाप विड्रॉ कर दिया एज पर जो रूल है, ठीक है। तो वो नो एडमिशन माना जाएगा यहाँ पे। एनी रेंट इन डिपॉजिट विच इज नॉट विड्रॉन, ये बोलता है जब तो विड्रॉ कर दिया तो एडमिशन, एडमिट शैल नॉट ऑपरेट एडमिशन, क्लियर बोला गया है। सेकंड में बोलता है अगर वो विड्रॉ नहीं करता है, any rent in deposit which is not withdrawn by the landlord or by person or person entitled to receive such rent shall be forfeited to government by an order made by the controller if it is not withdrawn before the expiration of 5 years from the date of posting of the notice of the deposit। अब ये कह रहा है ये क्लॉज कि अगर जो डिपॉजिट किया हुआ रेंट है 5 साल तक विड्रॉ नहीं किया गया, कोई भी आगे नहीं आया उसको विड्रॉ करने के लिए, और ना कोई इंटाइटल है उसको विड्रॉ करने के लिए, ठीक है, तो आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस ऑफ द डिपॉजिट, आफ्टर 5 ईयर वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के लिए फोरफिचर, गवर्नमेंट के खाते में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। बट इसके लिए भी एक प्रोसीजर है, कोर्ट ऐसे उसको फॉरफिट नहीं कर सकती है, उसके लिए क्या है, एक छोटी सी इंक्वायरी होगा, नोटिस पहले सर्व करना पड़ेगा। बिफोर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ फॉरफिचर द कंट्रोलर शैल गिव नोटिस टू द लैंडलॉर्ड or the person entitled to receive the rent and deposit by registered post at the last known address of such landlord, or the person or person and shall also publish the notice in his office and any local newspaper। तो मतलब 5 साल बाद भी जब उसको फॉरफिट करना है उससे पहले नोटिस सेंड करना पड़ेगा जो लास्ट एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड, उस पर्सन के लिए जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ था, लैंडलॉर्ड या कोई पर्सन का नाम, ठीक है, उनके लिए नोटिस सेंड किया जाएगा और साथ में पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल, अगर वो ऑफिस के बाहर एक कॉन्स्पिशियस पार्ट होता है वहां पे नोटिस लगा दिया जाएगा और लोकल न्यूज़पेपर वर्नाकुलर में उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट अगर कोई सामने नहीं आया, ठीक है, उसको विड्रॉ करने के लिए फिर कोर्ट क्या कर देगा, फॉरफिट दैट रेंट टू द गवर्नमेंट। क्लियर, लिखो, इन केस द डिपॉजिटेड रेंट इज, in case the deposited rent is not withdrawn, in case the deposited rent is not withdrawn within 5 years, within 5 years from the date of posting, from the date of posting of notice, from the date of posting of notice of deposit by the rent controller, by the rent controller, and and despite notice by registered post, and despite notice by registered post issued by the controller, registered post issued by the controller again to the landlords, again to the landlords or persons, again to the landlord or person entitled to receive the rent, entitled to receive the rent, comma, simultaneous with the publication of notice, with the publication of notice in his office notice board,
in his office notice board and in local newspaper. In local newspaper. Full stop. If no one come forward, if no one come forward to receive the rent, come forward to receive the rent, comma. The controller can order forfeiture of the deposited rent. Forfeiture of the deposited rent in favor of government. Forfeiture of deposited rent in favor of government. Clear? This is all about आपका section 23. These are the rights of the tenant. ठीक है? Previous lecture में discuss किया duties of the landlords and now rights of the tenant. Then tomorrow we will discuss eviction order. Section 14 कल start कर लेंगे. से eviction order कौन कौन से grounds पे होते हैं, defaulting ground and non defaulting ground, both ground पे. Next class will be tomorrow.